A very good morning, dear students. Welcome back to e-learning classes of Sacred Hearts. I hope all of you have done good in your exams. So, dear students, from now onwards, we will continue our syllabus. In the previous lecture, we were on the chapter number 7, that was Sources of Business Finance, in which we have discussed in the last lecture about the equity shares and about the preference shares. Dear students, today we are going to discuss about some other sources of owners fund. In this, the very first source is the retained earning. So the very first question arises in our mind, dear student, that what is the retained earning? So, dear student, retained earning is that part of income that have not been distributed to any of the insider or to any of the outsider. In the simple words, we can say retained earning is that part of income of company that is left out with the company, जो company ने अपने पास बचा लिया है, that is known as retained earning. There are some certain names of the retained earning that is known as plugging back of profit, that means profit को बचा लेना. Retained earning, that means that part of earning that have been kept out, retained, बचा लिया. Next, self-financing or internal financing and so on. All these are some other names of the retained earning. So, dear students, in the place of retained earning, the examiner can ask, what do you mean by self-financing? What do you mean by internal financing? What do you mean by surplus or what do you mean by reserves? Dear students, see further, it is considered the most important source of finance since it is internally generated. दिस मैथड ऑफ फाइनेंसिंग इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग. इसको सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि जो कंपनी है वो खुद अपने लिए जनरेट कर रही है. इट इज़ नॉट कलेक्टेड फ्रॉम समवेयर आउटसाइड एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज self financing. Dear students, now the next topic of this, features of retained earnings. So there are a lot of features of retained earning. We are going to discuss them one by one. The very first one, that is a cushion of security. What does cushion used to do? Cushion used to provide us comfortableness. In the same way as the cushion used to provide us comfortableness in the organization, in the company, retained earning provides the comfortableness to the particular company so that the funds can be utilized as per the need and the requirement. Second, funds for new and innovative projects. Generally, the outsiders do not provide you funds, that means to company, funds for the innovative and new projects. Why it is so? Because it is having a high amount of risk. So the outsiders generally hesitate in this condition. But when company wants to have something innovative project or the new project, in this condition the company can use its retained earning without any ask question how and why. Next, third, medium and long term finance. Whatever the fund have been arranged through the retained earning can be used for the business in the long term as well as in the medium term. Next, conversion into ownership fund. See, the surplus retained earnings can be converted into share capital by the issue of bonus share. जो आपका retained earnings हैं वो ownership में convert हो सकती हैं. How? Through the issue of the bonus shares. In issue of bonus shares, there is no outflow of cash. कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा. इन्वेस्टर्स टू आर बेनिफिटेड बाय द इशू ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या हो रहे हैं, जो शेयर्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं. देन इट इज़ समथिंग बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एज वेल, फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल. Next, most dependable source. When we have to arrange the finance from outside, so we are not having any surety that whether we will be able to arrange the finance or not. But when we are having the money in our pocket, in that condition we can be damn sure about that particular amount that we are having in our pocket. The same thing happened with the retained earning. And the last one, no interference. Whenever we used to borrow the money from outside or we get the equity share capital, in every of the condition we get some free element, that is the interference of that particular concern organization or the persons or the investors. But in the retained earning there is no external interference. कोई भी interference इससे आपका add on नहीं होता है. This is about the retained earning and its features. Now the next source of internal source of finance, that is the GDR. What is GDR? Global Depository Receipt. And what is Global Depository Receipt, beta?
GDR are issued against of issue of equity shares in the global market. Global market में against of equity share जो financial security issue होती है, that is known as GDR, that is a global deposit receipt. These are indirect equity offerings. Why these are indirect equity offerings? Because these are issued on the basis of equity shares. If you are not having equity shares, then you cannot issue GDRs. That is why it is stated as the indirect equity offerings. The equity shares issued against GDR are held by an international bank called depository. और ये जो shares issue होते हैं, these are issued by an international bank. एक इंटरनेशनल बैंक, कोई भी सर्टेन इंटरनेशनल बैंक इसको इशू करता है, एंड दैट बैंक इज कंसिडर्ड एज डिपॉजिटरी. क्या बोलते हैं बेटा उसको? डिपॉजिटरी बोलते हैं. सी फर्दर, कंपनीज issue dividend notices and reports etc regarding these shares to the bank only. और कंपनी जो भी आपका डिविडेंड नोटिस है, जो रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो इंडिविजुअल पर्सन को इशू नहीं करेगी, बस इस पर्टिकुलर बैंक दैट इज अ डिपॉजिटरी बैंक को क्या करेगी? इशू करेगी. दीज शेयर्स आर कॉल्ड डिपॉजिटरी शेयर्स. क्योंकि ये शेयर्स डिपॉजिटरी के पास रहते हैं, उस पर्टिकुलर बैंक के पास रहते हैं, दैट इज वाई दीज शेयर्स आर नोन एज द डिपॉजिटरी शेयर्स. द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट. और यहाँ पे कोई भी वोटिंग राइट शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है. नाउ सी द फीचर्स ऑफ GDR. द वेरी फर्स्ट वन, कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द GDR is in the foreign currency. Whatever the capital will be collected by the concerned company, it will be the capital will be in the concern of the foreign currency. किसमें होगा? foreign currency में होगा. One more thing बेटा I am adding over here. If we talk about the GDR, then the capital contributed by these shares is in dollar. जो यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट होती है, जो कैपिटल हमारे पास इनफ्लो होता है कैपिटल का, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स. किसके फॉर्म में होता है बेटा? डॉलर्स के फॉर्म में होता है. एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट. क्या बोलते हैं बेटा इसको? डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट व्हेन वाज द फर्स्ट GDR वाज इशूड इन होल ऑफ द वर्ल्ड, देन इट वाज इन 1990. है ना? जो फर्स्ट GDR इशू हुआ है वो 1990 में इशू हुआ है, एंड इट इज़ इशूड बाय द सिटी बैंक. Now see for the second point, the issue price of GDR is fixed on the basis of investors' response, and whatever the prices will be there, that will depend upon the market forces. That means obviously the response of the investors. If the good response will be there, then obviously prices will be high, and if the response is not good, obviously the price will remain low. Next, no voting right will be given. We have discussed earlier. नेक्स्ट, GDR आर ईजिली ट्रांसफरेबल एट स्टॉक एक्सचेंज. आपने परचेज किए, नाउ यू कैन सेल आउट टू एनी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन वेरी फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन. लास्ट, द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू GDR. हमारी कंट्री में जो फर्स्ट GDR इशू हुआ है, दैट वॉज इशूड बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज. किसने इशू किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इशू किया था. एंड फॉर हाउ मच? $150 million. And in 1992, and I think as per the 1992, $150 million is a very considerable amount. ठीक है. This is all about the GDR, Global Depository Receipt. Now on the same concept of GDR, ADR also works, but the only specification is there. It is the American Deposit Receipt. That means these securities are issued only to the citizens of India and none other than the citizen of America. ठीक है. ये जो आपकी सिक्योरिटीज इशू होंगी वो सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए इशू होंगी. एक्सेप्ट देन अमेरिकन सिटीजन्स ये सिक्योरिटी किसी और को इशू नहीं हो सकती. सी फर्दर, एन ADR इज जस्ट लाइक अ GDR एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशू टू अ सिटीजन ऑफ USA ओनली. किसको इशू होगी? USA के सिटीजन को होगी. एंड इट कैन बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ US. और कहाँ पे एनलिस्ट होगी? US के स्टॉक एक्सचेंज में. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट इज सेम. द डिपॉजिटरी, इंटरनेशनल बैंक डिपॉजिटरी होगा, वो सेम है जैसा कि आपका किस में था बेटा? दैट वाज इन द GDR. Now the concept of ADR is comparatively much strict. Disclosures are required. Rules and regulations are comparatively strict. Trading is strict. And why it is so? Because the rules and regulation of US stock exchange are very strict. And as the rules and regulation of US stock exchange are very strict, and as a result the American Depository Receipt also includes a lot of rules and regulations and strictness over there.
सी फर्दर, एन ADR इज एन अमेरिकन डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, और ये क्या है बेटा आपका अमेरिकन डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है। एनी अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी कैन इशू ADR, कोई भी पर्टिकुलर बैंक जो कि अमेरिकन बैंक है वो क्या कर सकता है, आपके ADR को इशू कर सकता है। इन बोथ द प्रीवियस कंडीशन ADR और GDR दोनों ही कंडीशन में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री में फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो हो रहा था। GDR में ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ADR में अमेरिका से, दैट मीन्स USA से। नाउ इट इज़ द इंटरनेशनल डिपॉजिट रिसिप्ट, इसमें हमारी कंट्री से कैपिटल का आउटफ्लो होगा। ठीक है, क्या होगा, कंट्री से कैपिटल का आउटफ्लो होगा। ठीक है, सी एन IDR दैट इज इंटरनेशनल डिपॉजिट रिसिप्ट इज जस्ट लाइक GDR, किसकी तरह होता है बेटा, GDR की तरह होता है, बट इट इज़ इशूड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। किसको होता है ये इशू, सिटीजन ऑफ इंडिया को इशू होता है। जैसे कि आपका जो ADR था वहाँ पे सिर्फ अमेरिका के सिटीजन को, इफ़ यू टॉक अबाउट IDR दैट इज इंटरनेशनल डिपॉजिट रिसिप्ट, तो सिर्फ किसको इशू होता है, टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। थ्रू IDR फॉरेन कंपनीज रेज फंड्स फ्रॉम इंडियन मार्केट, IDR के थ्रू जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडियन मार्केट से फिनेंस को क्या करती हैं, अरेंज करती हैं, कैपिटल को अरेंज करती हैं। द फॉरेन कंपनी IDR विल डिपॉजिट शेयर्स टू एन इंडियन डिपॉजिटरी, यहाँ पे भी एक डिपॉजिटरी का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिटरी कौन होगा, एनी ऑफ द इंडियन बैंक विल बी द डिपॉजिटरी। See further, the depository issues receipt to investors in India against these shares. And see further, Standard Chartered Bank was the first ग्लोबल कंपनी टू फाइल फॉर IDR। ठीक है, अगर हम लोग बात करें IDR की इंडिया में, तो जो फर्स्ट IDR इशू हुआ है वो किसने किया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। ठीक है, कहाँ, इंडिया में। सी फर्दर, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू इशू IDR, अगर कोई कंपनी IDR इशू करना चाह रही है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखिए। द वेरी फर्स्ट वन, द इशूइंग कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन इट्स होम कंट्री, सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये कि वो पर्टिकुलर कंपनी अपनी होम कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में क्या होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए, एंड इट मस्ट नॉट बी एनी हाउ प्रोहिबिटेड, वो किसी भी बेसिस पे प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, इट हैज़ नेट टेंजेबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ इन द 3 ईयर्स कंटिन्यूसली, उसकी जो टेंजेबल एसेट्स हैं, इनटेंजेबल एसेट्स की बात नहीं करते बिकॉज दे आर वेरी रेयर एंड हार्ड टू क्रॉस चेक। सो द इनटेंजेबल एसेट्स मस्ट बी एटलीस्ट 3 करोड़ इन द कंटिन्यूस 3 ईयर्स। ठीक है, 3 करोड़ की उसकी टेंजेबल एसेट्स होनी चाहिए कंटिन्यूसली 3 ईयर्स में, मिनिमम क्राइटेरिया ये। नेक्स्ट, इट मस्ट हैव नेट वर्थ ऑफ ₹1 करोड़ इन ईच प्रिसीडिंग ईयर। ठीक है, और जो उसका नेट वर्थ है, जो उसका प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो वो इन 3 प्रिसीडिंग ईयर एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए। दीज आर द 3 क्राइटेरियाज फॉर द इशू ऑफ द IDR। एनी ऑफ द कंपनी who fails to accomplish any of the element over here out of these 3 will not be eligible to issue the IDR। इन तीनों conditions का fulfill होना क्या है बेटा, compulsory है। And see the last topic, that is the reservations in IDR issue, that means अगर IDR issue होता है तो उसकी slotting क्या है और उसका reservation criteria क्या है। तो यहाँ पे देखिए, at least 50% of issue is to be allocated टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो इंस्टीट्यूट्स इसमें वर्क करते हैं बाइंग एंड सेलिंग में, 50% एटलीस्ट उनको क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए। देयर आफ्टर 30% मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज टू परचेज द फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन कंपैरेटिवली बिग लॉट एंड यूज टू प्रोवाइड टू द स्मॉल इन्वेस्टर्स इन द वेरी स्मॉल लॉट्स। एंड द लास्ट वन, बैलेंस 20% ऑफ द इशू टू नॉन इंस्टीट्यूशनल, जस्ट लाइक यू एंड मी, वी आर द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए 20% एंड द एम्प्लॉयज़ के लिए भी, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। दिस इज़ द आउटलाइन थ्रू विच, ऑन द गाइडलाइंस ऑफ विच IDR इज़ issued. So it is all about the owner's fund. In today's lecture, what we have discussed beta, we have discussed about the retained earning, features of retained earning. Thereafter, the next source, that is GDR, Global Deposit Receipts, its features. Thereafter, ADR, American Deposit Receipt, and the last one, that is the IDR, International Deposit Receipt, along with the eligible criteria and reservations in IDR issues. This is all about today. God bless you all.